गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है कई बार बोला है कि जो है मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होनी चाहिए कंट्री में। उसके लिए कई बार रेगुलेशंस भी बनाए गए हैं। जैसे अभी रिसेंटली अगस्त में नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक होल्ड लगा दिया न्यू मेडिकल कॉलेजेस और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस पर, जहाँ पर जिन स्टेट्स में खासकर 100 मेडिकल एजुकेशन सीट्स से ज़्यादा हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, जो कि WHO की रिकमेंडेड आंकड़ा है। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन को जो है सदर्न स्टेट्स ने क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि वहाँ पर तो है ज़्यादा मेडिकल एजुकेशन सीट्स हैं, तो वो कह रहे थे कि ऑफ कोर्स कि उनकी जो प्रोग्रेस है उसको एक तरह से रोका जा रहा है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने बोला है कि ये गाइडलाइंस जो है रीजनल डिस्पैरिटीज़ कम करेंगी, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स को बढ़ाएंगी ऐसे रीजन्स में जहाँ पर मेडिकल एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है अच्छे से। तो एनएमसी ने ये भी बोला है कि अभी 40,000 MBBS सीट्स फिर भी जो है कंट्री में ऐड की जाएंगी मेडिकल कॉलेजेस में, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट हम इक्वल करेंगे उसको। अब सीट्स कैसे करंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अगर हम देखें तो लगभग 13 स्टेट्स और यूटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर 100 सीट्स पर मिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा हैं। तमिलनाडु सबसे ज़्यादा सीट्स जो है वो वहाँ पर हैं अवेलेबल। और मेडिकल एजुकेशन कॉलेज की जो सीट्स हैं वो सबसे कम है मेघालय, बिहार और झारखंड में। तो क्या स्टेट्स जो है अब उनको बंद करने पड़ेंगे कॉलेजेस या कट करनी पड़ेंगी सीट्स? नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो रेशियो ब्रीच होगी तब उनको न्यू वो सीट्स जो है वो ऐड नहीं कर पाएंगे 2024 और 2025 के बैच में। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्टिंग उनको बंद करना पड़ेगा। अब क्या रीज़न है इसके पीछे? ऑफ कोर्स रीज़न ये है कि हम रैशनलाइज़ करना चाहते हैं मेडिकल एजुकेशन को और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को भी ऑफ कोर्स। और ये नेसेसरी है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री उसको एक तरह से रैशनलाइज़ किया जा सके। अब जो एनएमसी ने जो रेशियो डिसाइड की है ये कोई ऐसे नहीं कि कुछ रैंडम नंबर है, बल्कि WHO का रिकमेंडेड नंबर है ऑफ फिजिशियंस पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। अब हम नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में देखते हैं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में 2019 में इसको बनाया गया है और इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया है। मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशन को जो है ये रेगुलेट करता है और ये कमीशन जो है मेडिकल क्वालिफिकेशंस को भी रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, इसमें 33 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्टेट्स और यूटीज़ को जहाँ पर वो अपने व्यूज़ और कंसर्न्स भी रख सकते हैं, ऑफ कोर्स जो मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल है। अब इसमें 4 ऑटोनॉमस बोर्ड्स भी हैं, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए, मेडिकल असेसमेंट के लिए, एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने रिसेंटली अपने बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड करते हुए रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पर जो है रिटेल इन्वेस्टर्स को फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड जो 2020 में टैक्सेबल इशू किए गए थे उसको भी जो है वो सब्सक्राइब करने का ऑप्शन दे दिया है। तो फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2020 में जो टैक्सेबल इशू हुए थे उनके बारे में देखते हैं। जुलाई 2020 में इनको इशू किया गया था। इंटरेस्ट बेयरिंग नॉन ट्रेडेबल बॉन्ड्स हैं और रिपेबल हैं ये 7 साल के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। और कोई भी पर्सन जो रेजिडेंट है इंडिया में अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में या फिर समझ लो किसी जॉइंट बेसिस पर या ऑन बिहाफ ऑफ माइनर जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस ऑफ कोर्स इसको एलिजिबल नहीं है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसमें 1000 की है और उसके मल्टीपल्स की है। मैक्सिमम लिमिट की कोई लिमिट नहीं है इसमें। सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग इशू किया जाता है डिजिटली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसको हम बॉन्ड लेजर अकाउंट कहेंगे। इंटरेस्ट रेट जो है इसमें ये सेमी एनुअली पे किया जाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये फ्लोटिंग रेट पर है तो ये ऑफ कोर्स चेंज होता रहता है इंटरेस्ट रेट। और नेशनल सेविंग इन सर्टिफिकेट रेट के का जो है उसके साथ इसको लिंक किया गया है। अब इसकी रीपेमेंट 7 साल बाद होनी है। इंटरेस्ट जो है रिसीव होगा वो टैक्सेबल होगा। ओके, अब आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है? 2021 में नवंबर में इसको इशू किया गया, लॉन्च किया गया। वन स्टॉप सोल्यूशन है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स द्वारा। और इस स्कीम के अंडर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट जो है वो खोल सकेंगे आरबीआई के साथ एक ऑनलाइन पोर्टल पर, और फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। ठीक है, चाहे वो प्राइमरी मार्केट की हो चाहे सेकेंडरी मार्केट्स की हो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पैट्रियट
एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पेंटागन ने रिसेंटली बोला है कि वो एडिशनल पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बटालियंस मिडल ईस्ट में भेजेंगे, बिकॉज यूएस ट्रूप्स के ऊपर वहाँ पर बहुत अटैक हो रहे हैं। तो ये पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक ऑल वेदर सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि काउंटर कर रहा है टैक्टिकल मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स को। ठीक है। ऑफ कोर्स ये 1991 में गल्फ वॉर में सबसे पहली बार यूज़ किया गया था। ये अभी भी इन सर्विस है यूएस और अलाइड कंट्रीज़ के पास। ऑल्टीट्यूड इसका 24 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकता है और 160 किलोमीटर अवे ही अपने टारगेट्स को ये अटैक कर सकता है। 50 टारगेट्स को ये एक टाइम पर ट्रैक कर सकता है और 5 ऑफ देम को एक ही बारी में जो है वो एंगेज भी कर सकता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि लगभग 90 ट्रूप्स चाहिए होते हैं इसको ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए, एज़ कम्पेयर टू S-400 ट्रायम्फ मिसाइल जो रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम जो रशिया का है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डेंजर। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक टीम ऑफ रिसर्चर्स ने एक सॉफ्टवेयर टूल डेवलप किया है जिसको डेंजर कहा जा रहा है, डिलीटेरियस एंटीसिपेटेबल गाइड्स इवेल्युएटेड बाय आरएनए सीक्वेंसिंग, जो कि एक हमारे को सेफर वे देगा जीनोम एडिटिंग करने के लिए सब ऑर्गेनिजम्स में। तो अभी तक हम लगभग पिछले 10 सालों से क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, ऑफ कोर्स आपको पता ही है। जैसे पहला चैलेंज है फिनोटिपिक, मतलब कि जो अनएक्सपेक्टेड डायनामिक्स होते हैं क्रिस्पर के, उनको हम मॉनिटर नहीं कर पाते क्वांटिटेटिवली कि क्या चेंजेस आए हैं जीन में, उसको हम क्वांटिटेटिवली मॉनिटर नहीं कर पाते। सेकंड चैलेंज ये है कि जो है कोई रेफरेंस जीनोम चाहिए होता है कुछ भी मेजर करने के लिए, ठीक है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के साथ। और अनएक्सपेक्टेड सीक्वेंस एडिटिंग अगर जो होती है तो उससे मिसमैचेस भी हो सकते हैं जो हमें पता नहीं चल पाता है। ओके, तो डेंजर जो है वो इन सब चीज़ों को ओवरकम करेगा और रिसर्चर्स को अलाउ करेगा कि वो सेफर ऑन एंड ऑफ टारगेट असेसमेंट्स कर सकें। अब डेंजर के बारे में अगर हम देखें तो एक न्यू सॉफ्टवेयर टूल है जो कि जीनोम एडिटिंग को सेफर बनाएगा। डेंजर जो है वो आरएनए सीक्वेंसिंग डेटा को इस्तेमाल करके असेसमेंट्स करने में हेल्प करेगा। ये सॉफ्टवेयर क्वांटिफाई करेगा जो फिनोटिपिक रिस्क है, और जो है एक रेफरेंस जीनोम की भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, और इसको हम कई ऑर्गेनिजम्स के ऊपर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। तो जीनोम एडिटिंग तो आपको पता ही है क्या होती है, कि साइंटिस्ट जो है जो डीएनए है वो चेंज कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो, बैक्टीरिया हो या एनिमल। इसकी वजह से जो है फिजिकल ट्रेट्स में चेंजेस लाए जा सकते हैं, जैसे आई कलर चेंज किया जा सकता है, डिजीज रिस्क को कम किया जा सकता है। ठीक है। अभी तक हम क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे खासकर, जिसको हम सीजर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें डीएनए को किसी स्पेसिफिक स्पॉट पर कट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल कॉग्निटिव कंप्यूटिंग मार्केट साइज जो है वो 32.8 बिलियन पहुंच चुका है 2022 में। तो ये कॉग्निटिव कंप्यूटिंग क्या है? बेसिकली कंप्यूटराइज मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन थॉट को सिमुलेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में खासकर। तो जो जो कंप्यूटर्स हैं वो जैसे ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है वैसे ही कंप्यूटर्स भी वर्क करने लग जाते हैं। तो एक इंटेलिजेंट सिस्टम हम बनाना चाहते हैं जो कि ह्यूमंस जैसे जैसे रिएक्शन देते हैं या जैसे सोचते हैं, उसको वो अडेप्ट करके उसके ही बेसिस पर डिसीजंस ले सके। तो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खासकर बहुत ज़्यादा यूज़ है। ओके, तो सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम्स, डेटा एनालिसिस, पैटर्न रिकॉग्निशन के थ्रू जो है हम कंप्यूटिंग सिस्टम्स को सिखा सकते हैं ये। और ये लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रिकॉग्नाइज कर सकता है, स्टडी कर सकता है, पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकता है, इनसाइट्स दे सकता है अपने। ओके, अगर हम देखें तो इसका हेल्थ केयर, बैंकिंग, फाइनेंस, रिटेल हर सेक्टर में इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 जो है वो शुरू हुई है उमरोई कैंटोनमेंट में, इंडिया में। और ये एक जॉइंट बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया और मलेशियन आर्म्ड फोर्सेस। तो मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है हम उसको एनहेंस करना चाहते हैं आपस में, और जॉइंट कमांड पोस्ट और एक इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस ग्रिड के थ्रू जो है कंटिजेंट्स दोनों कंट्रीज़ की इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और ड्रोन्स और यूएवीज और हेलीकॉप्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना को 2021 और 2022 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये स्कीम जो है 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को मर्ज करके बनाई गई है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। ओके, बेसिक मोटिव इसका यह है कि ऐसी कम्युनिटीज़ में पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देकर। ओके, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू ऑफ कोर्स। अब इस स्कीम में 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट क्या है?
आदर्श ग्राम बनाना, एससी डोमिनेटेड विलेजेस में ग्रांट्स इन एड देना, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स में जो सोशो इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं एससीज के, कॉम्प्रिहेंसिव लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स देना जैसे स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, ताकि जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सके एससी कम्युनिटीज़ को। फिर हॉस्टल्स बनाना हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पर जो कि टॉप रैंक्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो गवर्नमेंट द्वारा फुली या पार्शली फंडेड हैं। ओके, सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is uneven distribution of medical colleges in India. This topic is important for your governance section. So central government on multiple occasions has been emphasizing that there is a need for equal distribution of medical colleges across the country. As recently as in August 2023, a regulation was issued by National Medical Commission to put a hold on new medical colleges and expansion of existing medical colleges in states which are having more than 100 medical education seats per million population. Okay, but southern states have criticized this move, and they have said that that they are not eligible now for any more medical education seats because of this regulation. NMC has in return argued that these guidelines will bring down regional disparities in the availability of doctors, and NMC says that don't worry, we'll still be adding 40,000 MBBS seats across the country in medical colleges, even if we want to evenly distribute it. Okay, so how are seats currently distributed? At least 13 states and UTs have more than 100 seats per million population. Tamil Nadu, of course, has the most seats, but there is deficiency of medical college seats in relation to population in most states like Meghalaya, Bihar, and Jharkhand. So, will the states who are having excess seats will have to start shutting down colleges or cutting seats? No, of course. This ratio will be applicable only if new medical colleges are sought. Okay, for from the 2024 and 2025 batch. Existing seats would not be suffering from this regulation. Okay, so what are the reasons behind this notification? Of course, the need is to rationalize the number of seats or private medical colleges across the country and to ensure a good distribution of medical colleges across the country. So NMC's ratio is not just any random number, but it is based on the WHO's recommended number of physicians per unit of population. So what is National Medical Commission? So NMC has been constituted by an act of parliament in 2019, and it has replaced the Medical Council of India. So this NMC regulates medical education and medical professionals. It grants recognition of medical qualifications, and it also gives accreditation to medical schools, grants registration to medical practitioners, monitors medical practice, and even assesses the medical infrastructure in country. So it has 33 members including chairperson, and there is also a medical advisory council which provides the platform through which states or UTs can put forth their views and concerns before the NMC. Okay, so there are 4 autonomous boards also, like for one for undergraduate education, postgraduate education, medical assessment and rating, ethics and medical registration. Okay, so the next topic is floating rate savings bond. This topic is important for your economy section. So RBI has recently expanded the basket of products which are being offered through the retail direct portal, and now retail investors would be able to subscribe to floating rate savings bond 2020 taxable, which was issued in July 2020, and it's an interest bearing non-tradable bond issued by Government of India, which will be repayable on the expiration of 7 years from the date of issue. So any person who is resident in India can invest in these bonds in their individual capacity, or even on a joint basis, or even on behalf of a minor. Okay, so a Hindu undivided family is also eligible to invest in that. So NRIs are not, of course, eligible to invest in these bonds, and the minimum investment amount should be 1,000 rupees and multiples thereof. There is no maximum limit. A certificate of holding is issued as proof of subscription, and it is only issued in the electronic form, which is called the bond ledger account. So the interest rate is of course payable semi-annually because it is floating rate. There is no fixed rate of interest, and this interest rate is linked to the national savings certificate rate. Okay, so the bonds will be payable on the expiration of 7 years, and the interest received will be taxable, of course. What is RBI's retail direct scheme? It was launched in 2021, and it is a one-stop solution to facilitate investment in government securities by individual investors. And under the scheme, the individual investors get an option to open a retail direct gilt account with the RBI using an online portal. Okay.
So the next topic is Patriot Air Defense Missile System. This topic is important for your security section. So Pentagon has recently said that it will be sending additional Patriot Air Defense Missile System battalions to the Middle East because of recent attacks on US troops in the region. So this Patriot stands for Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target, and this is US Army's most advanced air defense system, and it is an all-weather surface-to-air missile defense system to counter tactical ballistic missiles, cruise missiles, and advanced aircraft, and it was first used in combat during the 1991 Gulf War. So it is in service with the US and allied countries since then. Okay, and it can reach an altitude of more than 24 kilometers, and it can also hit targets up to 160 kilometers away. It can also track up to 50 targets and engage 5 of them at once. And this the problem is that this Patriot battery requires as many as 90 troops to operate and maintain it. So the next topic is danger. This topic is important for your science and tech section. So a team of researchers have recently developed a software tool called Danger, and this will provide a way for the safer design of genome editing in all organisms. So for about a decade, researchers have been using the CRISPR technology, but there are certain challenges in that. Okay, like the first challenge is about phenotypic or observable effects which are caused by unexpected CRISPR dynamics, and of course which cannot be quantitatively monitored. The second challenge is that there is a need for a reference genome to make comparisons, but because of that also unexpected sequence editing can also occur without them knowing, and that's why mismatches can also occur. So danger analysis overcomes all these challenges and allows the researchers to perform safer on and off target assessments. So what is danger? So deleterious and anticipatable guides evaluated by RNA sequencing is a new software tool which makes genome editing safer. Okay, so it can quantify the phenotypic risk at the gene ontology level without the need for a reference genome, and it can also be performed on various organisms. Okay, so it also it is also an open source software which allows for its adaptation to different genome editing systems beyond CRISPR uh, technology. So what is genome editing? So genome editing lets scientists to change the DNA of many organisms including plants, animals, and bacteria. So it allows them to change their physical traits like eye color, disease risk, etc. And technologies like the CRISPR technology, which is also called the scissor technology, cuts the DNA at specific spot to make the required changes. Okay, so the next topic is cognitive computing. This topic is again important for your science and tech section. So according to a recent report, global cognitive computing market size has reached US dollar 32.8 billion market in 2022. With this cognitive computing is the use of computerized models to simulate human thought process in complex situations, and that's why the computers start mimicking the way the human brain works. So the goal is to create intelligent systems which can adapt and make decisions similar to the human brain, and this cognitive computing uses artificial intelligence to perform the tasks. Okay, so it uses certain processes like self-learning algorithms, data analysis, and pattern recognition to to learn itself, to learn the way human mind works, and it can replicate human capabilities like deduction, learning, perception, and reasoning. And high amounts of unstructured data is used to identify patterns and insights. Okay, so it is very useful in fields like healthcare, banking, finance, and even retail. Okay, so the next topic is exercise Harimau Shakti 2023. This topic is important for your security section. So recently, exercise Harimau Shakti has commenced in Umroi cantonment of India, and it's a joint bilateral training exercise between India and Malaysian armed forces. So the aim is to enhance military capability by conducting multi-domain operations in a sub-conventional scenario. And during the exercise, both contingents of the participating countries will establish a joint command post and establish an integrated surveillance grid. Okay, so the focus will be on high degree of physical fitness also, and this exercise will culminate in a 48-hour long validation exercise in a semi-urban area. So the last edition of this exercise was conducted in Malaysia in 2022. So the next topic is Pradhan Mantri Anusuchit Jati Abhyuday Yojana. This topic is important for your social issues. So
and also your governance section. So Pradhan Mantri Anusuchit Jati Abhyuday Yojana is being implemented since 2021 and 2022 period, and it's a merged scheme of three centrally sponsored schemes called the Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana, Special Central Assistance to Scheduled Caste Subplan, and Babu Jagjeevan Ram Chhatravas Yojana. Okay, the aim of the scheme is to reduce poverty of SC communities by generation of additional employment opportunities through skill development, income generating schemes, and other initiatives, and to also improve the socio-economic development indicators by ensuring adequate infrastructure for them. Okay, especially in SC dominated villages. So there the scheme has three major components: development of SC dominated villages into an Adarsh Gram, okay, and to integrate development of SC majority villages with adequate infrastructure and which will be provided under this scheme. There is also a component of grants in aid for districts or state level projects which are working for socio-economic betterment of SCs, and to create infrastructure in SC dominated villages which have been selected under Adarsh Gram component. Okay, so there is also this comprehensive livelihood projects which would include components like skill development, infrastructure development, financial assistance towards loan taken by beneficiaries for their livelihood generation opportunities. Okay, and there is one more component called the construction of hostels in higher educational institutions, which are top ranked as per the NIRF rankings, and they are funded by either state, central, or UT governments fully or partially. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.